बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिस इज़ अजमत बतूल। Our today's topic is transitive and intransitive verbs. Verbs are action words. They show different actions. There are two types of verbs that we are going to discuss: transitive verb and intransitive verbs. Transitive verbs. A transitive verb is a verb that needs an object to receive an action. ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो एक्शन को रिसीव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की उसको ज़रूरत होती है. द ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन. एग्जाम्पल इज़ शी टोल्ड द ट्रूथ. शी टोल्ड द ट्रूथ एक सेंटेंस है. शी इसमें सब्जेक्ट है, टोल्ड इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रूथ जो है वो ऑब्जेक्ट है. Intransitive verb. An intransitive verb does not need an object. In such a sentence, there is no object in the sentence that receives the action. Intransitive verb को object की ज़रूरत नहीं होती जो action को receive करे. Example is she laughed. She subject है, laughed एक intransitive verb है. There is no need of an object after this verb laughed, because it is an intransitive verb. Subject, verb and object. ट्रांजिटिव और intransitive verb की एग्जाम्पल्स करने से पहले हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं. टू अंडरस्टैंड ट्रांजिटिव एंड intransitive verbs in a proper way, let's revise the concepts of subject, verb and object in a sentence. Subject of sentence. Subject is the doer of sentence. Subject performs actions in sentence. Subject is the noun that is doing something or that has done something in the sentence. Subject sentence का doer होता है, वो action को perform कर रहा होता है, वो जुमले में कुछ कर रहा होता है या उसने कुछ किया होता है. Verb of the sentence. Verb is the action word. A verb is the part of sentence that tells us what the subject has done और what the subject is performing. Verb action word होता है, वो part of sentence है, वो बताता है कि subject ने क्या किया है या वो कौन सा काम perform कर रहा है. Object of the sentence. आइए अब object of the sentence के बारे में बात करते हैं. Object is the receiver of the action in the sentence. An object is always a noun or a pronoun. The object of the sentence is the person or thing that receives the action of verb. Object can be a noun, a pronoun or a noun phrase on which the verb performs an action. It falls at the end of the sentence. Some sentences have an object but some do not have an object because transitive verbs need an object to receive an action while intransitive verbs को किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है, ये सेंटेंस में एक्शन को रिसीव करता है और ये हमेशा आमतौर पर जुमले के एंड में होता है. ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है while intransitive verbs को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. Intransitive verbs do not need an object. Examples of transitive and intransitive verbs. आइए अब कुछ sentences का analysis करते हैं और examples of transitive और intransitive verbs देखते हैं. He laughs. He is subject. He laughed. He is subject. Laughed is an intransitive verb. It does not need an object. Number 2. The moon shines brightly. The moon is subject. Shines is an intransitive verb. It does not need an object. Brightly is not an object. It is an adverb. It is showing manner. We can say brightly is adverbial qualification. Every word after the verb is not an object.
वर्ब के बाद आने वाला हर वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता. ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली अ नाउन और अ प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट सिर्फ वही नाउन और प्रोनाउन होता है जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है. शी टोल्ड द ट्रूथ. शी सब्जेक्ट है. टोल्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रूथ इज ऑब्जेक्ट. क्योंकि इसके ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए तो ट्रूथ इज ऑब्जेक्ट. Number 4, the car stopped in the jungle. The car is subject. Stopped is intransitive verb. In the jungle is adverbial qualification. ये लोकेशन के बारे में बता रहा है. The fire burns in the chimney. The fire is subject. Burns is intransitive verb. In the chimney is adverbial qualification. ये प्लेस के बारे में बता रहे हैं इसलिए adverbial qualification है. She eats bananas. She is subject. Eats is transitive verb. Bananas is object. The dog ran after him. The dog is subject. Ran is transitive verb. Him is object of the verb. Ali caught a parrot. Ali is subject. Caught is a transitive verb. Parrot is object. He spoke loudly. He is the subject. Spoke is an intransitive verb. Loudly is an adverb. Umar loves Pakistan. Umar is subject. Loves is transitive verb. Pakistan is object. The boy fainted. The boy is subject. Fainted is an intransitive verb. Children are playing near the road. Children is subject. Are is auxiliary. Playing is an intransitive verb. Near the road is adverbial qualification. This was today's lecture. If you like this lecture, please subscribe this channel. Thank you. Allah Hafiz.